Now we are going to cover cash books and petty cash books. Of course, इसी के अंदर हमने डिस्कशन करनी है इम्प्रेस कैश बुक सिस्टम की। देखिए, हमने इनिशियली जब हमने अकाउंटिंग शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ टी अकाउंट कॉल्ड कैश बुक। यहाँ पे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर कैश बुक का क्या हो रहा है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में भी आपकी कैश बुक इंक्लूडेड है। कैश बुक इज़ अ हाइब्रिड, इट्स अ लेजर एंड इट्स अ जर्नल एंड इट्स अ लेजर टू। ये दोनों हाइब्रिड फंक्शन कैसे क्रिएट करेगा और जो कैश बुक है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम फर्दर वीडियोस में रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन जो हमारा की कॉन्सेप्ट है बेसिक्स का वो वहाँ का वहाँ पे रहेगा। देखिए, जब आपके पास कैश इनफ्लोज आएंगे या फिर आपने कैश रिसीट्स की हैं तो वो डेबिट ही होंगी, और क्योंकि इनफ्लोज हैं वो आपके एसेट्स हैं। और जब आप कैश पेमेंट्स कर रहे हैं या फिर आउटफ्लोज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट ही होंगी। द बेसिक्स विल रिमेन सेम थ्रू आउट द अकाउंटिंग। हाउएवर, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिस तरह के टू कॉलम कैश बुक। अब ये क्या चीज़ है टू कॉलम कैश बुक? ये इसके अंदर हम अपने बैंक अकाउंट को भी इंक्लूड कर देंगे। तो हम एक ही टी अकाउंट बनाएंगे लेकिन उसके अंदर डिफरेंट हेडर्स डाल देंगे। लेट्स से ऑन द डेबिट साइड वी विल हैव अ बैंक कॉलम एंड अ कैश कॉलम। अब ये हम मिलाते क्यों हैं? उसकी रीज़न ये कि जो बैंक है और जो कैश है इन दोनों की नेचर सेम है। दोनों ही करंट एसेट्स हैं और दोनों ही इंक्रीज होने पे डेबिट होंगे। रिसीट्स दोनों की डेबिट होती हैं, और इसी तरह बैंक और कैश डिक्रीज होने पे क्रेडिट होती हैं। और जब भी आप पेमेंट्स करते हैं, इवन व्हेन यू आर डूइंग पेमेंट्स फ्रॉम बैंक और कैश, आप उसको क्रेडिट ही करते हैं। जब हम ये बात इस्टेब्लिश कर लेंगे तो फर्दर वी विल लर्न डिस्काउंट्स। हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्स आएंगे और डिस्काउंट अलाउड आएंगे। अब डिस्काउंट अलाउड इज बेसिकली एक्सपेंस और उसकी नेचर है डेबिट। तो हम एक और कॉलम बना लेते हैं अपनी कैश बुक के अंदर, तो इट्स कॉल्ड थ्री कॉलम कैश बुक। तो हम डेबिट साइड पे अपने डिस्काउंट अलाउड डाल देंगे बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड पे अपने डिस्काउंट रिसीव डाल देंगे बिकॉज इट्स योर इनकम, और इनकम्स इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती हैं। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपने परचेजेस की। जब आप परचेजेस करेंगे तो आप पे करेंगे, और जब आप पेमेंट्स करेंगे तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। लेट्स से यू हैव मेड अ परचेज फॉर लेट्स से $100। अब $100 की पेमेंट आपने करनी थी लेकिन आपको डिस्काउंट मिल गया $10 का। तो असल में जो आपने पेमेंट की है वो तो $90 की है। जो ₹10 का आपको या $10 का जो आपको डिस्काउंट मिला है उसको भी रिकग्नाइज कर देंगे। तो होगा कुछ ऐसे कि अपनी क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव में $10 लिखेंगे, और बैंक वाले कॉलम में या कैश वाले कॉलम में 90 लिख देंगे। एक्यूमुलेटेड जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो तो $100 की ही है, लेकिन उसमें से $10 का डिस्काउंट है और $90 जो एक्चुअली कैश आउटफ्लो है। अब अकाउंटेंट ये सब कुछ क्यों करता है? अकाउंटेंट अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, अपनी अकाउंटिंग को आसान करने के लिए करता है, क्योंकि ये कैश आइटम्स है, एक सेंसिटिव मामला है। और बैंक या फिर कैश जो होता है इसके अंदर जो इन्फ्लोज है मेजरली वो तो कैश का ही है। तो रात दिन की वो एक बैंक का अलग अकाउंट बनाए और कैश का एक अलग अकाउंट बनाए, फिर डिस्काउंट रिसीव और अलाउड का अलग अकाउंट बनाए, और ये जो ट्रांजैक्शन है यही फ्रीक्वेंटली हो रही होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन सबको एक हेडर के अंदर डाल देता है जिसको हम कहते हैं थ्री कॉलम कैश बुक। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हाइब्रिड कैसे करेंगे लेजर के साथ, इट गोज़ विद द लेक्चर। तो हम अपने फर्दर वीडियोस में हम डिसाइड करेंगे कि इनको कैसे रिकग्नाइज करना और थ्री कॉलम का एक्चुअली ऑपरेट कैसे करना। In this video, we are going to cover cash books. A very important concept before we start our cash book statements is discounts. होता है ऐसे कि जब आप कोई परचेजेस कर रहे होते हैं, against that, sometimes the supplier allow you some discounts. On the other hand, when you're making sales, you do allow discounts to your customers. Since these transactions are cash based, तो इन सब ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज हाउ कैन वी टैकल डिस्काउंट्स? In that, a very key important concept is, which is very important as per your MCQs, एग्जामिनर MCQs के अंदर बहुत दफ़ा पूछता है, वो है डिस्काउंट की दो किस्में। So there is one type of discount and then there is another type. These two types include this trade discount and cash discounts. इन दो की accounting कैसे होगी? We're going to learn this in this video. So let's just start with discounts. Basically, discounts are of two types. There is this trade discount, and the other one is
cash discount. Trade discount. The difference among them is immense and you need to figure out कि किस discount को हमने किस तरह treat करना है. So trade discount is basically negotiations. For example, you go to the market to buy the supplies. Let's say you're buying goods. Supplier आपको quote करता है price, let's say 100 per item. और आफ्टर अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वो आपको 95 रुपीज़ की चीज़ बेचते हैं. दिस 5 रुपीज़ डिस्काउंट इज़ ट्रेड डिस्काउंट. यह आपने नेगोशिएशंस की वजह से लिए. एंड माइंड यू, दिस नेगोशिएशंस वाला डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. द मेजर रीज़न इज़ ये जो डिस्काउंट है ये तो आपने नेगोशिएशंस से लिया है, तो ये लिस्ट प्राइस नहीं बनेगी. फॉर एग्जांपल जो 95 रुपीज़ है वो लिस्ट प्राइस है. जो 100 रुपीज़ है वो डिस्काउंट नेगोशिएशन के बाद उसकी जो लिस्ट प्राइस है वो 95 पे रिड्यूस हो चुकी है. इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को यू डू नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. सो फॉर एग्जांपल if a person says, let's say, if a product has been bought for 100 rupees or let's say 1100 rupees and you've been given 5% trade discount, so to get to the list price जिसके ऊपर आपने चीज़ रिकॉर्ड करनी है, अपनी परचेजेस रिकॉर्ड करनी है, you need to subtract 5% from your from the list price, from the price that the supplier has quoted. On the other hand, if we talk about cash discounts, this is the major discount. Major से मुराद ये कि this is what you're going to record in the books. So this is for early payments. Let's say आप suppliers के पास जाते हैं और supplier आपको कहता है कि you buy this product at this amount, let's say 200, and if you give me early payments, let's say अगर आप अगले 15 दिनों के अंदर payments कर देते हैं तो I'll give you a further 2.5% discount. 2.5% का discount further मिल जाएगा. Just to attract the customer कि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें. This sort of a discount is referred as cash discount. इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. अब कैश डिस्काउंट की ही आगे दो किस्में निकलेंगी. एक वो डिस्काउंट जो आपने ली है और एक वो डिस्काउंट जो आपने दी है. जो आपने ली है उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड और जो आपने दी है उसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड. सो पहले एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अकाउंट फॉर कैसे करना है. सो फॉर एग्जांपल 1, बॉब bought goods for $100. He was given 5% trade discount and 10% cash discount. So for the solution, हम सबसे पहले quoted price को mention करेंगे. That is $100. The first step will be to deduct trade discount. और ये discount कहीं भी mention नहीं होगा. So the trade discount in this example was 5%. 100 into 5 divided by 100, the amount should be 5. You subtract 5 from 100, your answer should be 95. The next step will be to deduct the cash discount. This is 10% of the list price. Now this $95 is the basic list price जिस पे आपने purchases खरीदी है. 10% of this is 9.5. The answer should be 85.5. This is the price that you're going to pay if you avail this cash discount. Moving on.
So we are now bifurcating our cash discounts into two categories. The one is trade discount, and the other one is cash discount. I beg your pardon. The one is discount allowed, and the other one is discount received. Discount allowed means what? The simple definition would be when you give discount to the customer. एक बहुत ही important concept जो आप यहाँ पे you can learn is that discount allowed की nature क्या होगी. So discount allowed is basically your expense और expenses की वजह से ये increase होने पे debit होगा. तो for example, I mean we sold goods to Amy for $100. Amy settled her account after given 10% discount. So examiner might not use the word cash discounts, or examiner might not tell you कि cash discount allowed है या discount received है. This is something that you have to figure it out, and it's very common sense कि अगर हमने चीज़ें बेची तो डिस्काउंट भी हमने दिया होगा, और इस डिस्काउंट को हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड. सो इसकी एंट्रीज क्या बनेंगी? सर इन अ नॉर्मल केस सिनेरियो, if you're making sales to Emmy, let's say these were on credit initially, so the entries that you should pass is Emmy debit with $100, and you will credit sales account by $100. But once आपका Emmy go ahead and settle the accounts, then the entries that you should pass is cash जो आपको रिसीव होगा. In this particular scenario, आपको जो cash रिसीव होगा वो $90 होगा, because you are giving 10% discount or $10 discount to Emmy. जो discount allowed होगा वो $10 का होगा, और जो Emmy का account credit होगा because now it's settled or it's closed, that will be 100. यहाँ से एक बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डिस्काउंट अलाउड है उसकी नेचर एक्सपेंसेस की थी और वो इंक्रीज होने पे डेबिट होगा. तो मोस्ट प्रॉब्ली एवरी टाइम इन योर अकाउंट्स डिस्काउंट अलाउड विल बी ऑन द डेबिट साइड. Similarly, if we go ahead and explore more about our discount received, so discount received is against your purchases. We refer discount received as incomes, or with your previous study you should know that increase होने पे incomes हमेशा credit होती है. So let's just have an example about this. We bought goods from James $200 on credit. So this is this one aspect, and the other aspect is later we settled our accounts and was given 5% cash
discount. So in this scenario, जो आपका aspect 1 है, वहाँ पे आपने since you bought goods, तो ये आपकी purchases कहलाएंगी and the amount will be $200. Or since you bought these items on credit, तो James as a liability credit होगी as a trade payable. Later on, when you settle your discount, तो आपकी दो aspects हैं. एक तो आपकी जो liabilities हैं वो decrease होंगी, वो decrease होने पे debit हो जाएंगी. The other aspect is आप cash payments कर रहे होंगे तो आपका cash reduce करने पे credit हो जाएगा. And on the other hand, discount received जो होगा वो भी आपका credit हो जाएगा because of the income nature. तो ये entries कुछ इस तरह से पास होंगी कि you will debit James with $200. You have paid 5% of 200 is 10, and the amount you should have paid is $190. The discount received would be $100. Hence, आपकी discount receive और discount allowed की entries pass होगी. I hope you have understand all the key concepts in the video. For any further ambiguities or discussions, you can write us in the discussion box.